으슥한 골목을 지나치며 밤늦게 귀가하는 어느 여인. 시간이 늦었다며 집요하게 신경질을 부리는 경비원을 뒤로 한 채 겨우 안으로 들어서고 친구들은 그런 그녀를 위해 깜짝 생일 파티를 준비해 두는데요. एक तो पीछे से फिर से कोई लाइट मार रहा था। गार्ड से भी लड़ाई हो गई। गेट ही नहीं खोल रहा था। बस यू वेरी लेट अनु। लैंडलॉर्ड से चाबी नहीं लेनी थी। 하지만 홀로 이사를 준비하던 아누는 रोज हॉस्टल आते वक्त ऐसे लगता है कभी गेट तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी। That's fucked. यार कोई है बाहर। रोज मेरा वेट करता है। 누군가 밖에서 자신을 노리고 있는 것 같다며 불길한 속내를 털어놓습니다. आओ चाय बनी रही है बस। हाय आई एम राजीव। हाय मधु। 6개월 후 델리에 도착한 마두를 반겨주는 일행들. सॉरी मैंने आपका रूम ले लिया। अरे नहीं कोई बात नहीं, बस ओनर को पता चला तो हम सब आउट ही हैं फिर। 과거 성적인 피해를 입고 스트레스 외상 증후군을 앓던 마두는 कोई है क्या दरवाजे पे? टाइम लगेगा खून, धीरे धीरे सब ठीक हो। So Madhuri, what brings you to Delhi? Sir, I have come to Delhi because of the opportunities it offers. 자유와 새로운 기회를 꿈꾸며 델리에 도착하지만 अब सर्टिफिकेट लाए हैं? Sorry sir, वो actually घर पे रह गए. 졸업장이 없다는 이유로 면접에서 탈락하고 How are you? अच्छा listen, मुझे तो तुम्हारे बजट में कुछ नहीं मिला, बट नकुल को एक जगह मिली है। नकुल? My fiance, बताया था ना मैंने तुम्हें। उसने एक जगह पता करी है, वो कह रहा है it's a little out of the way. Don't worry. चलो देर हो रही है। 결국 친구의 남자친구 도움으로 인적 드문 곳에 위치한 호스텔을 소개받게 되죠. मेरी एक फ्रेंड ने बताया इस हॉस्टल के बारे में. यहाँ कोई रूम अवेलेबल है? ये गवर्नमेंट फैसिलिटी है। जॉब पेपर, लोकल गार्जियन, सर्टिफिकेट सब लगता है। 행정 절차가 까다로운 정부 시설의 호스텔에서 낡고 어두운 방을 둘러보던 중 बाड़ा भरा हुआ है। इधर 3 रूम है और इधर 2। पेपर भी वही लगाई थी। शीशा टूटा हुआ है शायद। 열악한 환경과 위험한 주변 요소에도 불구하고 저렴한 월세에 끌려 결국 입주를 결심합니다. अच्छा है. 한편 जल्दी करो प्लीज। 투숙객들은 어두운 호스텔 복도를 지나 금기로 여겨지던 문을 열고 어느 방 안으로 들어가는데요. अनु, are you there? This time it will happen. Just wait. (333호에는) 의문스러운 긴장감이 감돌기 시작합니다. ये अन्नू के रूम का खत्म ही नहीं हो रहा है। लड़की मर गई और ये लोग पहुंच जाती हैं रोज वहां मजा करने। सेंसिटिव क्रीचर्स। अभी भी वो कमरा खाली है। कल आ रही है एक और। 주인이 죽은 방을 자꾸 들락거린다며 혀를 차던 관리소장은 신입을 입주시킬 겸 어수선한 호스텔 분위기를 잡으려 합니다. एक नई लड़की उस कमरा में रहने आ रही है। I don't want any nonsense, okay? But we didn't do anything. मैम प्लीज वो रूम मत खोलिए. ठीक है, मत बतलाओ। हम भी देखते हैं तुम लोग और कितना दिन चुप रहती हो।
उसमें कुछ है. क्या बोली? फिर से बोलो जरा. 하지만 투숙객들은 그 방 안에 무언가 존재한다며 기괴한 경고를 던지죠. It's about to start again. कैसे मशाज आपके मेहमान को अंदर रखा है जीवा किधर? किधर है जीवा? कौन? कौन? पता नहीं मेरे को, मैंने उसे देखा नहीं, मैंने उसको, मुझे बोला था साथ में काम करेंगे, फिर गायब हो गया वो. एक आदमी है, एक हकीम. 한편 사라진 아들의 행방을 추궁하던 미슈라는 올드델리의 어느 수상한 의사 밑에서 그가 일했다는 진술을 확보하죠. मेरा दिल इतना कमजोर है कि मेडिसिन मैं खा नहीं सकता. मेरी वाइफ का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. नहीं करना, करना ही नहीं है, सीधा बोलती है. औरत की नजर लिए बिना नहीं जाती है. 그 시각 진료실에서는 इसमें सब सही तो है. 2 साल से अंडा भी नहीं खाया मैंने. फुल्ली वेज. 하킴이 한 환자의 심리를 교묘하게 흔들며 기이한 약물을 권하는데요. फील हो रहा है मुझे पावरफुल. जी कहिए. मैं कांस्टेबल नीलू मिश्रा बब्बन से मिलकर आ रही हूँ. आपके लिए काम करता था. और ये जीवन मिश्रा. 바반의 증언을 따라 올드델리의 음산한 약방을 찾아온 미슈라 순경은 क्या काम करता था? मेरी दवाई में कुछ खास सामान लगता है, वो मुहैया कराता था. जैसे? जैसे कुछ गैर मामूली चीजें, कुछ पेड़ पौधे, कुछ खास किस्म के तेल. लेकिन मैंने ऐसे वाकई कई महीनों से नहीं देखा है. 그곳에서 사라진 아들 집안의 과거를 들으며 의사를 향한 의심은 점점 극에 달하죠. हाय, I'm मधु. तो निकल लो फटाफट. सॉरी. मुझे रहती थी ना उस कमरे में पहले. निकल नहीं पाई. लीव बिच. 한편 333호를 번갈아 지키며 새로운 마두리에게 호스텔을 당장 떠나라고 경고하는 투숙객들. 마두리는 쏟아지는 거친 악담에도 불구하고 어떻게든 이를 악물고 버텨내죠. All the best. All our clients should know our best of the offer. It's very simple. You have to call on these numbers. 겨우 콜센터에 취업해 한숨 돌린 그녀는 I love prawn sushi. Yeah, we have the best in town. Thank you. मेरी ट्रीट होनी चाहिए थी. आपने जॉब दिलाई है मुझे. Nonsense. This was nothing. वो नकुल थे आपके साथ. I'm so sorry. He was so embarrassed. अभी जो हुआ. 친구와 점심을 먹으며 델리 생활에 적응해 보려 하지만 तो वहीं ग्वालियर में मिले होंगे ना आप दोनों. नहीं उसका कजन हमारे कॉलेज ग्रुप में था. My Nakul is not from Gwalior. He's a typical दिल्ली वाला. I love it. 텅 빈 줄 알았던 호스텔 방에선 누군가 숨어 있는 듯 불길한 기척이 맴돌기 시작하는데요.
결국 한밤중 닫힌 문 너머에서 기괴한 현상이 번져 나가고 오랫동안 숨겨져 있던 실체가 서서히 모습을 드러냅니다. 시점은 과거로 넘어가 अपना घर, अपने लोग, शहर और दोस्त एक जमाना छोड़कर जाते हैं। इस साल भी हमारे सीनियर्स कॉलेज से निकलकर बाहर जा रहे हैं, तो ये आज की शाम उनके नाम। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। 졸업을 앞두고 새로운 출발을 꿈꾸며 화기애애한 시간을 보내던 마도와 아룬. पर मैं तो ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली जाऊंगी। तो बोलो ग्रेजुएशन तक अभी क्यों वेट कर रही हो? अभी चलो, एक साल अब वेट नहीं होगा मुझसे। 하지만 델리로 떠나고 싶어 하던 마도의 바람은 불길한 기운과 함께 뒤틀리기 시작하고 이내 정체불명의 존재에게 습격당하며 성적인 피해를 당하게 됩니다. Hi, may I help you? 시간이 흘러 델리의 한 사무실. नकुल खन्ना यही काम करते हैं? नकुल, या एक्चुअली मेरा ऑफिस यहीं सामने ही है, एक्सटेन इंश्योरेंस। उनकी कुछ डिटेल्स चाहिए थी, उनका परमानेंट एड्रेस, फोन नंबर। सॉरी, कांट गिव यू दैट। और आप मेरा नंबर ले लीजिए। अगर उनका बस ग्वालियर वाला एड्रेस मिल सकता तो। ग्वालियर? 과거 자신을 성폭행했던 가해자와 이름이 똑같은 벨라의 약혼남 나쿨의 회사를 찾아와 거짓말까지 하며 주소를 알아내려던 마두리는 눈앞에 실제로 나타난 나쿨을 보자 극심한 공포와 패닉에 빠져 황급히 자리를 벗어납니다. Excuse me. 한편 낡은 차를 끌고 이동하던 사감 그레이시와 경찰 미슈라는 रीमा का प्रेगनेंसी इतना एडवांस हो गया फिर भी बोलती है कि बाहर नहीं जाएगी। कितनी पास आ रही है, उस कमरे में कुछ हुआ है, बकवास। कुछ तो करना पड़ेगा। 호스텔 밖으로 나가기를 거부하는 투숙객들과 333호실을 둘러싼 기이한 현상, 그리고 사라진 아이들의 흔적을 조사하는데요. ठीक है क्या से हम वार्डन बोल रहे हैं लेडीज हॉस्टल के। जी No, that's not okay. That's not okay. क्यों? तुम लोग का साइकिक फादर पता नहीं कौन कौन यहाँ आ सकता है, फिर ये क्यों नहीं आ सकता है? That's not the point. We don't know this guy. 얼마 후 호스텔을 직접 찾아온 의사. नॉइज कभी कुछ दिखाई दे दिया पर कुछ खास नहीं। जो लड़की उसमें रह रही है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 333호실에 들어서는 순간 불길한 기운을 감지하며 ये कमरा खाली करना होगा। 이 방에는 갈 곳 없는 홀령이 머물며 파멸을 원하고 있으니 당장 봉쇄해야 한다고 경고하죠. वो रहती है यहाँ। वो नहीं जाने वाली, वो यही है। तो हम आपको ये बता दें कि अनु जिसका ये कमरा था उसका डेथ रोड पे एक्सीडेंट में हुआ था, इस कमरा में नहीं। इसलिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज लीव ना, आइए। चिल्ला लीजिए मुझ पर, लेकिन जो आप छिपा रही हैं बहुत भारी पड़ रहा है। 그럼에도 의사는 호스텔을 떠나지 못하는 투숙객들의 비밀을 꿰뚫어 보듯 이들에게는 죽음보다 더 잔인한 운명이 기다리고 있다고 경고하는데요. खास करके उस लड़की पर जो उस कमरे में रहती है। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। 한편 낯선 사람의 부름을 뒤로 한 채 마두리는 가까스로 호스텔로 돌아오는데요. ये क्या
लड़की देख के चल पगला गए हैं सब कायदों से हाँ रुक हाँ हाँ ठीक है मैं बस 10 मिनट बाय 그 시각 호스텔로 다시 돌아온 의사는 जहर की तरह किसी का गुस्सा और नफरत के अंदर एक शराब के जैसा बैठा है यहाँ जकड़ के रखा है आपको आइए भरोसा रखिए आइए 누군가의 분노와 증오가 저주처럼 이곳을 떠돌고 있다며 학생을 밖으로 불러내지만 보이지 않는 존재에게 목이 옥죄인 그녀는 끝내 한 발짝도 내딛지 못하는데요. मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला में से नहीं हूं लीजिए ये क्या है? जहर भी है दवा भी 이를 지켜보던 의사는 독이자 약이 될 수 있다는 의문의 약물을 건네며 자신을 믿으라고 말합니다. मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा 며칠 후 Excuse me. May I help you? बेला दी उठी नहीं अभी तक बेला एक्चुअली कल रात को ही घर चली गई थी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई गो टू माय ऑफिस ग्वालियर एड्रेस 나쿨의 집을 찾은 마두리는 과거 자신을 스토킹하며 범행을 저지른 사람이 바로 당신이라며 나쿨을 거세게 몰아붙이기 시작하는데요. Sorry? Okay, first of all, calm down. I don't have an idea what you're talking about right now. Please sit down. Just a second. Easy. Do not put pressure on me. 그 순간 치매를 앓는 나쿨의 아버지가 난동을 부리며 대화는 중단되고 I was born and brought up in Delhi. मैं अपनी जिंदगी में कभी ग्वालियर नहीं आया. I've never met you. I've never stalked you. And I've never assaulted you. So Bela told me that you had no idea who those guys were. Here's my card. 나쿨은 명함을 건네며 도움이 필요하면 언제든 연락하라는 말만 남긴 채 상황을 마무리하죠. में क्यों है लोग? इंडिया. हाय 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 आई एम मधु आई एम न्यू हियर आई एम एनी. दिस इज सरला. सरला. विच रूम? 333 वो जो उस तरफ है 이후 333호실에 입주한 마두리는 같은 층에 머무는 애니와 사를라를 만나 이야기를 나누는데요. अन्नू इन लोगों की ना बड़ी क्लोज फ्रेंड थी. उसकी डेथ के बाद ये लोग ज़्यादा किससे बात नहीं करते. उसकी डेथ मेरे रूम पे हुई. रोड एक्सीडेंट. 사틀라는 이전 거주자였던 아누가 세상을 떠난 뒤 그녀와 가까웠던 친구들마저 호스텔 안에서 하나둘 기괴하게 변해갔다고 털어놓습니다. आज इधर का रास्ता कैसे खुला है? कितने ही डॉक्टर को दिखा दिया, इसकी तकलीफ कमी नहीं हो रही है. 한편 사라진 아들 지바의 흔적을 쫓던 미슈라 순경은 의문의 영성 치료사 하킴을 찾아가 그가 환자들에게 독극물을 먹이고 정갈 기름 밀수와 불법 사열 시술까지 벌여왔다는 정황을 포착하는데요. सजदा करें माफी मांगे और इजाजत ले लें ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास मैडम वो डॉक्टर साहब ना इधर कट मार के खून निकालते हैं कभी कभी. क्यों? उसमें बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है ना, इसलिए. चलें? रुको. 하지만 점점 수사망이 좁혀오는 상황에서도 하킴은 썩어가는 자신의 몸을 유지하기 위해 상처받은 영혼의 피를 노리는 본색을 드러내고 इसकी सांसें चल रही हैं
ये नहीं हो पाई मेरे काबू। 마침내 333호실의 마두리를 다음 제물로 점찍으며 섬뜩한 집착을 보입니다. पड़ने वाली है, मुझे उसकी जरूरत है। 또 다른 실종자 사건의 진실을 추적하던 미슈라 순경은 शहर का बड़का अस्पताल में दिखाए खातिर दत्ता को लेकर आए थे यहाँ। सब उसको डॉक्टर बुलाते हैं। हमारे बच्चे की बलि चढ़ा दी। 디파의 가족들로부터 그녀가 의사라 불리는 인물에게 제물로 바쳐졌다는 충격적인 증언을 확보하는데요. खाली एक ठो लड़का आता था दवा देने, दीपा से मिलता था वो। यही आता था। कौन है? 이어 사진을 확인하던 미슈라는 자신의 아들 지바가 디파에게 약을 전달하던 심부름꾼이었다는 사실까지 알게 됩니다. उसका तरीका बताओ। लेकिन एक कीमत है मेरी। जो लड़की रहती है यहाँ, उसे मेरे पास भेज दीजिए। 그 시각 333호실을 둘러싼 기이한 사건과 호스텔 밖으로 나서는 순간 투숙객들의 몸에 이상이 생기는 원인을 조사하기 위해 의사 하킴이 호스텔을 찾아오는데요. रीमा को बेबी होने को है, वो मर जाएगी अंदर। प्लीज। उस लड़की को जरिया बनाना होगा। 하지만 하킴은 333호실의 여자를 영배로 삼아야만 이 굴레를 끝낼 수 있다며 섬뜩한 지시를 전달하죠. जब वो मिट चुकी हो तब उसे मुझ तक पहुंचाना होगा। शादी हो रही है, सर्कस हो रहा है। एंगेजमेंट पार्टी है। 한편 아룬과 함께 벨라의 약혼 파티에 참석한 마두리는 नकुल, so sorry for that day. Actually, I mean, it's fine. It's okay. 지난 일에 대해 나쿨에게 사과하지만 I'll be back. 이어진 아룬의 강압적인 스킨십 시도에 거부감을 느끼고 मैंने मना थोड़ी ना किया, बस वहाँ अजीब लग रहा था थोड़ा सा। फोटो भेजी थी ना बैक स्टेज से, इवेंट से पहले, वो मैंने अपने एक दोस्त को फॉरवर्ड की थी। 그곳에서 과거 자신이 겪은 트라우마 사건이 사실 아룬의 자랑거리 사진 공유와 위치 누설 때문이었다는 충격적인 진실을 듣게 됩니다. आज इसे पुराने लैब लेके जाऊंगा और सही वाली डेट होगी अपनी। उस कमीने ने वो फोटो मेरे ग्रुप में भेज दी। 이를 들은 마두리는 깊은 배신감과 절망에 빠집니다. बिना सोचे समझे फालतू की डी के आंखनी थी, तुमने सब कचरा कर दिया। 그리고 그날 밤 마두리는 잠을 청하던 중 기이한 영혼과 마주하게 되고 정신을 차린 뒤 자신의 발에 원인 모를 상처가 남아있는 것을 확인하죠. 시점은 다시 과거로 돌아가 ये गुर्दे का कलेजे का रेट मालूम है बा? ऐसे मैंने सुना है तुम काला जादूगर की लड़कियों पे वशीकरण करते हो। 집안은 하킴과 유해 처리와 장기 매매 그리고 약한 영혼을 노리는 흑마술에 대해 위험천만한 대화를 이어가는데요. मुझे भी सिखाओगे? तो क्या करेगा सिक्का? हैं कुछ लौंडियाँ बहुत उड़ती हैं। सीखो। 장면은 다시 현재를 비추고 पाजेब दिखाना।
देख लो कौन सी चाहिए। ये वाली। 사건의 진실을 추적하던 미슈라 순경은 강력 범죄 사건 현장에서 발견된 발찌를 빌미로 समझाना जरा कैसे पहुंचे उधर 의사의 조수를 압박하기 시작하는데요. चेला मैं नहीं, जीवा था उसका। और ये ना उसी ने उतारी थी उस लड़की की लाश पे से, उसको खड्डे में फेंकने से पहले। झूठ बोल रहा है तू। हैवान है वो, हैवान। 조수는 고인의 보석을 빼돌리고 유해를 벌인 진범이 미슈라 순경의 아들 지바라고 폭로하며 그를 거세게 자극합니다. फिर सोच लेना आगे क्या होगा। हाँ वो दवाई दी उसे? हाँ, उसके चाय में मिक्स कर दिया है। कहाँ मिलेगी वो इस वक्त? वो जॉब पे गई है। She works at this women's clinic. 몸이 좋지 않음에도 나쿨의 초대를 받아 모임 장소로 향하는 마두리. Madhu, hi. Hi. You came. You look very different. 그곳에서 벨라를 비롯한 사람들과 마주치지만 Let me get a drink for you. I didn't know you were coming. नकुल ने बुलाया तुम्हें? हाँ, मैं बस हाय बोलने के लिए आई थी। ऑफिस से अभी आई तो देर हो गई। 어딘가 어색한 분위기 속에서 쉽게 어울리지 못한 채 외로움과 혼란을 느끼는데요. एक्चुअली मुझे लगा शायद बेला दी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। Feel like an actor, little immature sometimes. That's it. 이를 눈치챈 나쿨은 그녀를 따뜻하게 다독이며 위로를 건네고 मन नहीं लगता, अकेला फील होता है। मैं कहीं फिट नहीं होती। Hey. Look at me. Madhu, look at me. 두 사람 사이에는 조금씩 묘한 유대감이 싹트기 시작합니다. 하지만 기괴한 소음과 환영에 계속 시달리던 마두리는 결국 333호실이 품은 깊은 공포에 완전히 잠식되어 가죠. (6개월) 전 बाहर मत जा प्लीज। सबके साथ कुछ हो रहा है, ढूंढ को। Shut up, Anu. I have to go. तुम ठीक हो जाओ and both of us will leave. Okay? 호스텔을 떠나려던 라나를 아누가 섬뜩하게 가로막는데요. All that superstitious nonsense. Mad stuff. Whatever happened has happened. We have to move on. Done? 시간이 지나 고열과 기괴한 환영에 시달리던 마두리는 मधु 방 안에 갇힌 채 있다가 가까스로 구조됩니다. मैम मुझे नींद नहीं आती और अजीब अजीब से सपने भी आते हैं। जैसे कल रात क्या देखा? कल मैंने देखा कि कोई दरवाजा पीट रहा है। 이후 마두리는 정신과 의사 쇼인이 베르마 박사를 찾아가 정체불명의 존재에게 끌려가는 악몽과 투숙객들의 몸에 새겨진 의문의 상처 이야기를 털어놓지만 मैम शक्ल नहीं देखी, बस एक फोर्स सा फील हुआ। उनकी बॉडी पे निशान होते हैं, किसी तरह के घाव, रोज। 그날 밤 또다시 악령에 빙의된 듯한 모습을 보이며 मधुरी 불길한 기운을 드러내기 시작합니다. To see the world. I thought the world is out there, waiting for me.
रोज इतना गुस्सा आता है ना इधर. 이후 호스텔을 찾은 쇼이니 박사는 투숙객들을 만나 괴소문의 중심에 있는 안우의 진실을 파헤치기 시작합니다. Friendship was. She saw me. She really saw me. You never thought of moving out with her? Try किया था but फिर उसका breakup हो गया and she got really depressed after that. 라나는 외로웠던 자신을 진심으로 이해해준 친구 안우가 실연 이후 우울증과 환각에 시달렸고 그녀가 세상을 떠난 뒤부터 투숙객들이 비명과 발작을 일으키며 호스텔 밖으로 나가지 못하게 됐다고 털어놓는데요. मेरे हस्बैंड तक को लगता है कि नाटक कर रही हूँ मैं. बेटी से भी नहीं मिलने देता अब. एक कदम भी हॉस्टल से बाहर निकालती हूँ तो मैं ही जानती हूँ मेरे अंदर क्या होता है. मैम इधर डर लगता था उसको. बोलती थी उसको इधर नहीं रहना. 쇼이니 박사는 코마를 밖으로 데리고 나가 두려움을 극복시키려 하지만 Come, it's okay. कुछ नहीं है. आओ. It's okay. Come. 코마는 문 밖에 나서는 순간 얼굴이 찢기는 듯한 고통을 느끼고 이내볼에는 정체를 알 수 없는 상처가 선명하게 드러나죠. एक लड़की तुम्हारे दवाखाने आई थी. फिर उसकी लाश मिली. कितनी औरतों को मारा है तुमने? तो मेरे पास सीखने के लिए आता था. 한편 미슈라 순경은 의사 하킴을 찾아가 사건에 대한 진실을 추궁하지만 क्यों मारा उन लड़कियों को? मेरे पीछे होगी तो बेटा भी जाएगा. क्या करवाता था तू जीवा से? लाशें फेंकता था वो मेरे लिए. जिंदा है? हाँ? वापस आएगा वो. 지바 역시 유해 처리에 가담했다고 폭로하며 그녀를 거세게 압박하는데요. Come sit, I'll drop you. नहीं, it's okay. मैं चली जाऊंगी. It's okay, it's fine. Come sit. 그 시각 마두리를 차로 데려다 주던 나쿨은 I just thought that I could talk to you once, if that's okay with you. 친절한 가면을 벗어던지고 मैं ही था उस रात को. अब बोल. 과거 마두리에게 성적인 피해를 입힌 진범이 바로 자신이었다고 밝히며 본색을 드러냅니다. गाड़ी रोको. 격분한 마두리가 필사적으로 달아나자 나쿨은 일당들과 함께 그녀를 뒤쫓기 시작하고 어두운 컨테이너 단지를 무대로 숨막히는 추격전이 펼쳐집니다. 공포에 질린 마두리는 가해자들의 협박과 비열한 회유 속에서 또다시 처절한 생존의 기로에 놓이죠. 하지만 악령에 빙이 된 마두리는 초인적인 힘으로 공범들을 순식간에 제압하고 이를 뒤늦게 목격한 나쿨은 겁에 질린 채 재빨리 현장을 벗어납니다. ये तो पोस्टमार्टम फाइल है सर. नहीं सर, ऐसे मत बोलिए सर. पर घोषित कर दिया था उसको. तभी पता चला कि
यमुनानगर चौकी को एक लाश मिली है 6 महीने पहले। 한편 경찰서를 찾은 미슈라 순경은 서장으로부터 6개월 전 강에서 발견된 지바의 유해는 이미 화장됐다는 사실과 함께 부검 기록을 전달받고 절망적인 충격에 빠집니다. चलो मेस में चलते हैं, चाय पीते हैं, आराम से बात नहीं, मुझे बताओ कमरे में क्या है। मैं पागल हो रही हूँ, प्लीज। 한편 환각과 기억의 공백에 괴로워하며 방의 정체를 묻는 마두리에게 पुरानी दिल्ली से बुलाया था एक आदमी को, वो मदद कर सकता है तुम्हारी, हम सबकी। मैं उसके पास जाना होगा, वो तुम्हें सब बता देगा। 동료들은 올드델리의 주술사를 찾아가 보라며 연락처를 건네고 क्या हुआ मधु? सब ठीक है ना? मैम मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। 결국 마두리는 호스텔을 떠나기로 결심합니다. आज निक्की को लेने उसके फैमिली वाले आ रहे हैं। वो खुद ही बोली है कि उसको यहाँ से जाना है। बारिश बहुत ज्यादा हुआ है, बिल्डिंग भी पुराना है, इसलिए डैम्प हो गया है। 한편 호스텔을 벗어나지 못하는 니키의 극심한 트라우마를 치료하기 위해 Mrs. Behel, your daughter is feeling a mix of fear and pain. So I suggest we should take her out under sedation. 가족들과 의료진은 진정제를 투여해 강제로 그녀를 데리고 나가기로 결정하는데요. अगर मुझे कुछ होता है, प्लीज bring me back. 약 기운의 의식이 흐려진 니키는 자신에게 무슨 일이 생기면 꼭 다시 깨워달라며 언니에게 애원하듯 부탁하고 It's fine. It's fine. I'm here. Mama's here. Huh? It's okay. 가족들은 그녀를 차에 태워 호스텔을 빠져나갑니다. लगभग 1 महीने पहले मैं दिल्ली आई थी। यहाँ जॉब मिली मुझे, हॉस्टल में एक कमरा भी लिया मैंने, पर 한편 동료들이 알려준 올드델리의 영혼의 병원을 찾아간 마두리는 의사이자 주술사인 하킴을 만나 पहले मुझे लगता था मेरे कमरे में कुछ है, पर अब लगता है शायद मेरा ही दिमाग खराब है। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं रहता मेरे साथ क्या हो रहा है। 방 안을 떠도는 섬뜩한 존재와 기억이 끊기는 증상, 그리고 환각에 대해 털어놓습니다. जब कोई रूह आपके ऊपर काबू कर लेती है तो आप खुद एक गहरी नींद में चले जाते हैं। बाद में याद आता है सब। मैंने उसे महसूस किया है। 이후 하킴은 마두리를 공격해 자신의 제물로 바칠 의식을 준비하기 시작하는데요. सर वहाँ पे उसका कमरा है और वहाँ पे दवाखाना ऊपर। सर हम ऊपर चलते हैं। ये रखता क्या क्या था भाई? 하지만 경찰이 급습해 하킴의 비밀 진료소와 은신처를 수색하고 ये क्या बनाता था भाई? 미슈라 순경은 마두리를 인질로 붙잡고 있던 하킴을 홀로 마주합니다. जाने दे उसे! जाने दे! पुलिस को बताना, वो यहाँ पे! अगर मैं पकड़ा गया तुम्हारा बेटा कभी नहीं मिलेगा।
बकवास मत कर। लाश मिली है मुझे मेरे बेटे की। लेकिन वो यहाँ है। उसकी मौत हॉस्टल के उसी कमरे में हुई थी। 그러나 하킴은 지금 자신을 체포하면 죽은 아들의 영혼을 영원히 찾을 수 없을 것이라며 호스텔의 비밀의 방을 미끼로 섬뜩한 거래를 제안한 뒤 그대로 자취를 감춥니다. रिपोर्ट आए तो बताना। हाँ, मैं शाम को डॉक्टर बजाज से बात कर लूंगी। ओके मैम, बिल्कुल। Did you see that? 한편 가족들과 병원을 찾은 니키는 설명할 수 없는 기괴한 현상이 이어지는 혼란을 겪죠. कुछ काम नहीं कर रहा यहाँ पर। ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। Gory visuals here from the basement of a man claiming to be a shaman, a spiritual healer in Old Delhi. He has butchered several women in one of the most shocking cases of human sacrifice to rob the capital. 하킴의 인신공양 연쇄 범행이 도시 전체를 뒤흔드는 가운데 तो जैसे कि आप देख सकते हो, जीवा का फोन लास्ट टाइम यहीं एक्टिव था। ये संजीवन के आसपास का एरिया है। 미슈라 순경은 아들 지바의 휴대전화 마지막 위치가 문제의 PWW 호스텔 인근 산제이 반이었다는 사실을 확인하고 그날 밤 감춰진 진실을 밝히기 위해 호스텔로 향합니다. 6개월 전 새해를 기념해 호스텔 벽에 손바닥 자국을 남기며 즐거운 시간을 보내던 투숙객들. क्या हुआ? क्या हुआ? चोट लग गई है? कुछ नहीं। खून आ रहा है। 그때 페인트 칠을 준비하던 지바가 손을 다치자 안우는 직접 상처를 치료해주지만 이내 그의 주머니에서 레이저 장난감이 떨어지고 तो तू है। तुम रोज रात को लाइट मारते हो। पता है हम लोग कितने परेशान होते हैं। अरे दीदी, आप क्या समझा रही हो इसे? दो गौड़ी का लौंडे को जिंदगी हराम करके रखी इस कमीने ने। 입구에서 자신들에게 레이저를 비추며 괴롭혀온 사람이 지바였다는 사실을 알고 분노하는데요. पकड़ और निकल यहाँ से। रंडिया साली बहनचोद। 하지만 며칠 후 지바는 바방과 함께 또다시 호스텔 주변을 맴돌며 भाई चल ना यार, क्या ठंड में मारते बैठा तू, चल ना। वहाँ मेरी वही हॉस्टल में बैठी होगी, ऑर्डर के साथ बैठ के दारू पी रही होगी। फिर घर आएगी वही बकचोदियाँ। हॉस्टल की लड़कियों को देख, कुत्ता कमाती हैं, खाती हैं। बहन जो है तो रंडी है ना, लेकिन क्या है बात की। बैठ इधर, मैं निकल रहा हूँ। बब्बर बैठ ना, बब्बर चल, बैठ ना। ओए 여성들을 향한 음담패설을 늘어놓고 गेट पे आ गई हूँ। नहीं, तुम लोग शुरू करो। कहाँ जा रही है? इधर आजा, मजे करा दूंगा। 귀가하던 안우에게 레이저를 비추며 위협합니다. क्या दीवार के पीछे छुप के भौंकता रहता है रोज? इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है तेरी। यहाँ बाहर आने से डर लगता है। बड़ी गर्मी चढ़ी तेरे। गर्मी सर्दी सब चढ़ रही है। क्या हुआ? चल चल जल्दी आ। 더는 참지 못한 안우는 경비도 없으니 들어와 보라며 지바를 도발하고 अगली बार औकात में रहना। I hate the city. I fucking hate the city. I can't believe I'm back. For California. 격분한 그는 끝내 호스텔 안으로 침입하는데요. तुझे समझ नहीं आया? तेरी इतनी हिम्मत?
이후 집안은 여성들을 무차별적으로 폭행하며 난동을 부리고 위험을 직감한 투숙객들은 필사적으로 맞서기 시작합니다. कब तक रहोगी हो हॉस्टल में? हैं? हैं? 치열한 몸싸움 끝에 क्या बोला तू? क्या 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 करेगा सरिया डाल के? 여성들은 횃불을 던져 지발을 제압하고 He's dead. He's dead. He's dead. 차갑게 쓰러진 그의 모습을 마주한 순간 걷잡을 수 없는 공포에 휩싸이죠. वार्डन आ गई. क्या कर रहा है? सो रहा है कि ड्यूटी कर रहा है? मकान में भर लेता है गाना. 그때 ये टेरेस पे आग क्या लगी है? 옥상의 불빛을 발견한 호스텔 소장 그레이시가 기습 점검에 나서자 여성들은 서둘러 지발을 안우의 방인 333호로 옮깁니다. एक को जेल के अंदर भेजूंगी। तुम इधर आओ। मैं मेरी बात सुनिए। इधर आओ। इधर आओ। मैं मेरी फायर क्यों लगाया? जल्दी करो। क्या चल रहा है अंदर? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैं वो अनु के लिए पार्टी रखा था. 실연 파티 도중 사고가 난 것이라 둘러대며 कि उसको निकाल दिया। वहाँ बहुत लड़कों से लड़ाई हो गया। उस दिन का तुम लोग का कहानी है ब्रेकअप और लड़का मकान मालिक और सामान. देखिए चेहरा देखिए देखिए ना कितना मुंह पे मारा है देखिए. इसलिए हॉस्टल जला दो. लाइट ऑफ कीजिए. सोने जाइए आप लोग सब. चलिए हटिए यहाँ से. 가까스로 추궁을 넘긴 이들은 결국 사건을 은폐하기 위해 한밤중 유해를 강가로 옮기기 시작하죠. 시간이 흘러 지바의 사건을 겪은 투숙객들은 마침내 호스텔을 떠나기로 결심하고 가장 먼저 안우가 퇴소에 나서는데요. बैग कैसे गिर गया? डिक्की तो हम ठीक से बंद किए थे. मैम मैम रुको मत प्लीज. रुको तुम इधर. हम देख. मैम प्लीज मैम चल. 하지만 지바의 영혼이 끊임없이 돌아오라고 속삭이자 공포에 사로잡힌 안우는 차 밖으로 뛰쳐나가고 끝내 그의 영혼에 지배당한 채 달려오던 차량에 치여 비극적인 최후를 맞이합니다. 시간은 다시 현재로 돌아와 지바에게 몸을 완전히 빼앗긴 마두리는 कहाँ जाएगी? हॉस्टल. हॉस्टल क्यों जाना है?
वो है ना वहाँ 아룬을 찾아가 반드시 호스텔로 돌아가야 한다고 알리고 투숙객들은 용기를 내 호스텔 입구 밖까지 발걸음을 옮깁니다. 하지만 그 순간 리마의 산통이 심해지자 तुम लोगों को ना थोड़ा उठाना पड़ेगा ओके कम 1 2 3 लिफ्ट हो गया ओके ओके ब्रीथ एपिड्यूरल के लिए यू हैव टू वेट फॉर हेल्प ओके 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 टिल देन जस्ट ब्रीथ हाँ 친구들은 급히 침대를 준비해 그녀를 눕히고 심호흡을 유도하며 의사와 연락이 닿기만을 간절히 기다리는데요. 그때 호스텔에 도착한 마두리는 극심한 발작과 함께 이상 행동을 보이며 여성들을 공격하기 시작하고 투숙객들은 가까스로 그녀를 제압해 침대에 묶어둔 뒤 वो मधु वो वापस आ गया जैसे तुमने बोला था शी इज बैक वो जहर उसे पूरा पिला दीजिए जब जीवा उसमें बस चुका होगा मैं आऊंगा उसे ले जाने चलो 하킴이 마두리를 완전히 무너뜨리기 위해 준비한 독약을 먹이죠. 결국 마두리는 극심한 환각과 환청 속에서 처절한 고통에 몸부림치고 폭력과 복수, 억울한 누명의 과거가 뒤섞인 환상을 마주합니다. 그때 사탄의 모습을 한 지바가 나타나 모든 것을 포기하고 자신과 함께 떠나자며 끝없이 그녀를 유혹하는데요. I see something. क्या? Riva, push. I see something. It's the baby's head. Riva, दीदी push करो please. Riva, दीदी जोर लगा दो बस. 뒤늦게 모든 진실을 알게 된 미슈라 순경은 마두리의 방으로 찾아와 지바의 이름을 애타게 부르며 그녀를 어루만지고 하킴은 호스텔 아래에서 마두리의 영혼이 완전히 잠식되기만을 기다립니다. जीवा जीवा जाने दे इसे मेरे बिना तो कुछ नहीं है 하지만 환각 속에서 지바의 악령과 맞서던 마두리는 끝까지 저항하며 억눌렸던 자신의 내면과 마주하고 मैं रहूंगा तेरे साथ हमेशा लास्ट तक पक्का मधु 아룬과의 진심 어린 약속을 떠올리며 마침내 어둠을 이겨내기 시작하죠. 마두리가 악령의 속박에서 완전히 벗어나는 순간 리마의 아기가 무사히 태어나며 친구들은 끝내 안도의 눈물을 터뜨리지만
지바의 영혼이 하킴의 몸을 빼앗아 버리자 하킴은 초월적인 힘을 손에 넣은 채 호스텔 안으로 들어와 여성 투숙객들을 차례로 쓰러뜨리기 시작하는데요. 그 순간 마두리가 마지막 힘을 다해 그의 목을 베어버리고 수많은 희생을 낳았던 호스텔의 참혹한 비극은 마침내 막을 내립니다. Beautiful. So. हाँ? मैंने पूछा आप गए कहाँ फिर? 한 달 후 친구들의 죽음과 관련해 경찰 조사를 받게 된 나쿨과 벨라는 मेरे फादर इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं घर चला आया दैट्स इट I'm telling you. Tell them about that crazy bitch. She was stalking him. पहले इसके ऑफिस, फिर इसके घर. 마두리가 나쿨을 집요하게 스토킹했고 그를 노리다 친구들까지 위험에 빠뜨렸다며 분노 어린 진술을 쏟아내는데요. She is mad. She's completely mad. मैं बोल सकती हूँ पूरे दावे के साथ उसने 하지만 마두리는 끝내 나쿨을 찾아가 그를 창문 밖으로 떨어뜨리며 처절한 복수를 완성하고 कितना बुज़दिल निकला और मैं सारा विश पीकर भी यही हूँ तुम्हारे लिए तैयार. 자신 안에 아직 악령이 완전히 사라지지 않았음을 암시한 채 드라마는 막을 내립니다. 카우프는 아마존 프라임에서 공개된 인도 심리 공포 드라마로 기숙사에 이사 온 한 여성이 기이한 존재와 숨겨진 비밀에 맞서게 되는 이야기를 그린 작품인데요. 현실적인 트라우마와 초자연적 공포를 결합한 음산한 분위기와 몰입감 높은 연출로 호평을 받았습니다. 하지만 전개가 다소 느리고 상징적인 연출이 많아 호불호가 갈리기도 했습니다. 심리 공포와 분위기 중심의 호러 드라마를 좋아하는 분들께 카우프 추천드리며 이상 호러원룸이었습니다. 감사합니다.